of mechanical engineering. Those students are preparing for the SSC JE, RRB JE, and this type of AE JE examinations. This session is very important for those students. In this lecture, I will discuss the previous year question of fluid mechanics, which is very important for your exam. आई थिंक आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेरे साथ डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए लाइव ज्वाइन करने के लिए। I have already completed 19 classes of previous year questions of fluid mechanics. If you not watching till now, please go through the playlist of my video of my channel. You can watch the previous questions answers the previous lecture. Okay, let's start from 476. This is the lecture number 20. और जो कोई भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेल्पफुल हो आपके लिए तो एक लाइक करके कमेंट करके बता सेशन कैसा हुआ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, मेटा सेंटर। ठीक है, मेटा सेंटर इज ए पॉइंट ऑफ इंक्रीज इंटरसेक्शन ऑफ vertical upward force through center of gravity of the body and center of line of the body. Bound force and the center of the body midpoint between the center of gravity and the center of buoyancy. All of I want explain the questions answer. Okay, provide you the shortcut process how to solve. मेटा सेंटर जो हाइट है, दिस इज द मिड बाउंस फोर्स एंड द सेंटर लाइन। बी इज द आंसर। कैसे ना देखो, सपोज लेट्स इट इज द फ्री सरफेस एंड द बॉडी इच हेयर, the some portion is the floating and the some portion is the submerged in the water or the liquid. Okay, take the center of gravity CG and this is the buoyancy, center of buoyancy. This is the center of buoyancy when this is the stable equilibrium. Okay, this is in one line. If I apply some forces, the body is move. Now the body is tilt this type. Here the center of gravity, center line of the body, sorry, center line of the body and the center of gravity in passes through this line. Okay, and bounce force is here move. The bound force is here move. This is the, so this point is meta center. About this point the body is oscillating. Okay, फिर भी चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। देखो, meta center is the point of the intersection of bound force and the center line of body. The meta center may be defined as a point about which a floating body starts oscillating. When given a small angular displacement, it is denoted by capital M. The meta center height of the distance between the center of the gravity of the floating body and the meta center height equal to GM, यानी मेटा सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं GM, और द मेटा सेंट्रिक हाइट इक्वल टू मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द वॉल्यूम ऑफ द इमर्ज सरफेस व इमर्ज बॉडी माइनस distance from the bounce, distance between the bounce center of bounce and center of gravity. Okay, next question friends, the stability of a dam is checked for. कोई एक डैम है उसका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? टेंशन एट द base, overturning of the wall or the dam, sliding of the wall or the dam, all the above. तीनों पैरामीटर ही चेक करना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए।
explanation देखो. The stability of a dam is checked for the overturning of the wall or the dam and the sliding of the sliding wall or the dam. A piece weighing 3 kg in the year was founded in the weight 2.5 kg submerged in water. What is the specific gravity? In this case, the specific gravity equal to weight of the body. The mass of the body is 3, and the uh, by mass of the body in air, weight of body in air. Okay, body minus mass, the mass in the body in weight, mass in the liquid. So this is 3 divided by 3 minus 2.5 yani 0.5. 6 is coming. D is the answer. D is the answer. Let's check the answer. Weight of the pieces in the air 3 kg, weight of the pieces in the water 2.5 kg, weight losses in the water 0.5 kg. So relative density of the specific gravity of a solid is the weight of the solid in air by the weight losses in the solid in water. Next question, a block hanging 3 Newton, weighing 3 Newton in air was found in the weight 200 Newton. When fully submerged in water, the specific gravity of the block. Friends, this is the same question on the previous question. जैसा था ऐसा ही क्वेश्चन है. देखो same formula, the weight in the air of the body 300 by air minus body weight of the body in liquid यानी water 200. 300 divided by 100, it's coming 3. देख सकते हो सेम प्रोसेस में सॉल्व करा किया है. When a ship travels in a sea, which the effect is more dangerous? Steering, pitching, rolling, all the above. Rolling is more dangerous. देखो types of the motion in the naval ship. Pitching, it is the limited angular motion of the ship about the transverse axis. Rolling, it is the limited angular motion of the ship about the longitudinal axis. Okay, take it, this is the ship. Okay, ship is movement this type, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है. दिस इज द रोलिंग. ओके, पिचिंग ट्रांसफर एक्सिस के अलोंग जब ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, दिस इज द पिचिंग. पिचिंग के टाइम पॉइंट देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स. If two objects are weighted in the water and the both of them lost the same weight, then the two objects must have the identical specific gravity. Weights in the air, volumes, d density, volume. From the Archimedes principle, the losses of the weight is equal to the volume of the body immersed. Weight of the fluid displaced by the principal bound force is the directly proportional to the density of the fluid. If the two objects are weighted in the water, same losses the same weight, then the two objects must have the identical volumes.
The resulting upward pressure of a fluid on a floating body is equal to the weight of the fluid displaced by the body. This is known as the um, bounce force. The resultant upward pressure of a fluid on a floating body is equal to the weight of the body is equal to the weight of the fluid displaced by the body. This is called the bounce then and the body is. Bounce force is less than the body, the displaced volume, displaced the body. This body is the sinking. Body will sink down. If the force of the bounce is less than the weight of the liquid displaced, then the body will sink down. When a body is immersed in the fluid, an upward force is extracted by the fluid of the body. This upward force is equal to the weight of the fluid displaced by the body. It's called the force of the bounce. Next question: a body of weight m kg immersed in the fluid displaced the n kgf of the fluid. The apparent weight, डिस्प्लेस्ड वेट को सब्सट्रैक्ट कर देना बॉडी वेट से m माइनस m एफ सी इज आंसर. देखो ढेर सारा एक्सप्लेनेशन में ढेर सारा बोला है, बट मैं जो है बोला हूँ वही एक करना माइंड में रखना, ठीक है. फिर भी देख लो आर्गुमेंट इज प्रिंसिपल क्या है ना. इट स्टेट दैट द अपवर्ड बाउंड फोर्स that is extracted on a body immersed in a fluid, whether the fully or the partially submerged, is equal to the weight of the fluid that the body displaced. If a body is submerged, then the apparent weight each of the body equal to weight of the body minus bounce force. A cylinder of the body is cross-sectional area A, height h, the density rho s, immersed depth h, the liquid of the density rho, tied and the bottom with a string. The tension in the string is. कोई भी बॉडी है सो इसमें 52 फोर्स जाना ज़्यादा है. ओके, we know the 52 force equal to weight of apparent weight इक्वल टू क्या होता है weight of the body minus bounce force. So the bounce force equal but in this case the tension in the string, this is the bounce force. चेक कर लेते हैं सबसे अच्छा है. देखो bounce force in this condition tension plus weight of the body. So if you put this, it's coming rho ag rho a minus rho sh. Consider the following statements. Increase the metacentric height. मेटासेंट्रिक हाइट mg इंक्रीज होगा तो क्या होगा इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, डिक्रीज इन स्टेबिलिटी, इंक्रीज इन कंफर्ट फॉर द पैसेंजर इन शिप, डिक्रीज इन कंफर्ट इन पैसेंजर इन शिप. मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगा तो इंक्रीज इन स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज इन द डिक्रीज कंफर्ट ऑफ द फॉर द पैसेंजर इन शिप. देखो 1 and 4 है. टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन t इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर के जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू मेटासेंट्रिक हाइट. So time period of oscillation is inversely proportional to metacentric height.
So metacentric height increase होगा तो time period of the oscillation is decreases. Hence the body oscillate very fast and the stability increase but the comfort is decrease. Next question, an odd shape body weighing 7.5 kg and occupying 0.01 meter cube volume will be completely submerged in the fluid. So specific gravity is specific gravity equal to क्या specific gravity equal to density of the body. So density of the body by the density of the fluid यानी liquid water 1000. So density of the body equal to mass per unit volume. Mass is 7.5 per unit volume 0.01. It's coming 750. So 750 divided by 1000 for specific gravity, it's coming 0.75 t. 0.75 is the answer. देखो देख सकते हो जो मैंने सॉल्व किया है सही है. Density equal to mass per unit volume, it's coming 750 kg per meter cube, and the specific gravity of the body is density of the body by density of the water, it's come 0.75. Next question, a body floats in the water with one third of its volume above the surface of the water. If the placed in the oil, it floats with the half of its volume above the specific gravity of the oil. The specific gravity of the oil. So specific gravity of the oil के लिए हमको क्या चाहिए, जो डेंसिटी ऑफ द ऑयल चाहिए. डेंसिटी ऑफ द ऑयल मिलेगा तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर और आइडियल फ्लूइड विच इज आइडियल फ्लूइड वाटर हो जाएगा तो मिल जाएगा. सो इसको करने के लिए पहले जो फर्स्ट कंडीशन है, वन थर्ड ऑफ द वॉल्यूम अबव द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर. सपोज दिस इज द free surface, one third, this part is one third volume is one third of v, this is the 2/3 by v. So it is equal to bound force equal to rho g v of the body equal to bound force rho g v of the weight fluid displaced by the water, rho g of the volume of the body, volume of the body v. So density of the body into g into v equal to submerged part of the density equal to 1000 10 over 3 into g into v is 2 by 3, 2v by 3. So v cancel out, g cancel out. It's coming density 2000 divided by 3. Density of the body is coming 2000 divided by 3. Okay, so if the body is in place in oil, then it's half of the body is floating, of the volume is floating, and half is submerged. So same formula use, density of the body rho into g into v equal to in water density of the oil, in oil density of the oil into uh, g into volume is v by 2, part of the volume is immersed. So v cancel out, g cancel out, density of the body is 2000 divided by 3 equal to density of the oil by 2. So density of the oil is 4000 by 3. Density of the oil is coming 4000 divided by 3. So what is the specific gravity? Specific gravity is density of the oil divided by density of the water or the ideal fluid. So divided by 1000. 4 by 3 is coming. B is the answer.
चेक करते हैं। देखो सेम फॉर्मूला यूज किया, डेंसिटी में निकाला बॉडी का, उसके बाद में डेंसिटी ऑफ द ऑयल, देन it's coming the specific gravity of the oil. Next question friends, the buoyant force can be determined by the Newton's second law of the motion, Archimedes principle of the moments, Newton's third law of motion. This is the Archimedes principle. The magnitude of the buoyant force can be determined by the Archimedes principle. Archimedes principle states that the upward buoyant force is that which is extracted on the body immersed in a fluid, whether fully or the partially, is equal to the weight of the fluid that each body is displaced. Archimedes principle is the law of the physics fundamental to fluid mechanics. Find the buoyant force acting on a alumina cube which is suspended and immersed in a jar filled with the water when the given the side of the is given. Okay, volume. So first it converts into meter. 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है मीटर में, 10⁻⁻2 मीटर. और सो वॉल्यूम कितना होगा 5 क्यूब, दिस फुल क्यूब 125 इंटू 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻6. ठीक है ना. सो वॉल्यूम मिल गया. बावन फोर्स इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वी. Let's take the density equal to 1000 and g equal to 10 and volume is 125 into 10⁻⁻6. 1 2 3 4, 4 is cancelled out, -3 is coming. So it's 4 minus 2 is remain 1.25. B is the answer 1.25. देखो फ्रेंड्स ऐसे भी सॉल्व किया है 1.25. फर्स्ट वॉल्यूम निकाला है 1.25 into 10⁻⁻6. देन द बाउंड फोर्स फॉर्मूला इज यूज्ड रो जी इंटू वी. मैचिंग है, मैचिंग करना पड़ेगा. फर्स्ट जो है मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मेटा सेंटर जो है अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. देन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल. मेटा सेंटर ऊपर है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम देखते हैं. बी से 1, बी से सॉरी ए से 1 इसमें नहीं है, ए से 1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. सो बी इज द आंसर. और कोई चेक करने का जरूरत भी नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं आंसर. देखो बी इज द आंसर. स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बहुत बार बोला है आप लोगों को और दोबारा नहीं बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ द बाउंसी इज डिपेंड ऑन. Bouncer force depend mass of the liquid displaced, viscosity of the fluid, surface tension of the fluid, depth of the immersion. Mass of the liquid displaced. According to Archimedes principle, the bound force is of the partially immersed body is equal to the weight of the displaced liquid. वही बात है, घूर फिर के सेम ही बात आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज ए शिप enters into a river from a sea, one can accept it that it rises a little, it sinks a little, it remains same level. Its level depends on the material used for the construction. देखो रिवर जो है डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा डेंसिटी से फ्रॉम सी. अच्छा रिवर में आया है सी से, डेंसिटी कम था, कम डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी में आ गया. सो सिंक करे जाएगा थोड़ा. सॉरी रिवर का जो डेंसिटी था वो ज़्यादा था ना, ज़्यादा डेंसिटी से सॉरी क्या बोल रहे हैं, सी का जो डेंसिटी है मिनरल्स है ना, इसीलिए सॉल्ट्स है, सॉल्टी वाटर है सी में, इसीलिए डेंसिटी भी ज़्यादा है. ज़्यादा डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जाएगा तो बॉडी सिंक कर जाता है थोड़ा सा. सो इट सिंक्स लिटिल.
How is the metacentric height gm? Gm equal to small minimum moment of inertia divided by volume minus b into g. So C is the answer. Question number 495. The resultant upward pressure of the fluid and the immersed body is called the buoyancy. A large metacentric height is a vessel. Metacentric height ज़्यादा है. So oscillation is inversely proportional to metacentric height. So ज़्यादा होगा तो improves stability and makes the periodic time and the oscillation longer. ज़्यादा metacentric height है. So time of oscillation is reduced. No. Improve the stability makes the periodic time is oscillation shorter. No effect on the stability on the periodic time oscillation. Improve the stability makes the periodic time oscillation is shorter. दोनों ऑप्शन सेम है. Improve the stability makes the periodic time of the oscillation shorter. तो बी ले लेते हैं. बी इज द आंसर. डी लिया है. दोनों ऑप्शन ही सेम था, देख लो. Improves the stability and makes the periodic time of the oscillation shorter. Improve the stability and makes the periodic time of oscillation shorter. The percentage of the submergency of a body of the specific gravity 4.5, liquid of the specific gravity 13.6. Okay, percentage of the submerge. So specific gravity of the body 4.5 divided by specific gravity of the liquid 13.5. It's coming 53913 13.33 33%. Let's check the answer. देखो 33 is the answer. Specific gravity of the body by the specific gravity of the liquid into 100. ऑलरेडी कंप्लीट हो गया हम लोगों का. 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स का. दिस इज द 5th नंबर ऑफ द चैप्टर. सो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस करना. ओके देखना आपका परफॉर्मेंस बहुत बेटर हो जाएगा. स्टेडी फ्लो occurs when the pressure does not change along a flow. Velocity does not change. Condition change gradually with the time. Condition do not change with time at the point. Steady flow. Flow is steady means at a time at velocity sorry क्या कर रहा है. Steady flow means in the same in the same time the property does not change. t1 time there is the same property. This is the velocity does not change. Steady flow occurs. क्या बोल दिया. कंडीशन डू नॉट चेंज विद द टाइम एट एनी पॉइंट. वही तो बोला और क्या डाल दिया. कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट. वेलोसिटी डज नॉट चेंज माने एनी प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज. When the flow parameters at any given instant remain same at every point, the flow is said to be uniform flow. Given time t1 टाइम में इधर भी सेम हुआ, इधर भी सेम, इधर भी सेम, सो यूनिफॉर्म होगा. और डिफरेंट टाइम में एक ही स्पेस पे जब टाइम सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा, दिस इज द स्टेडी फ्लो. दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या है. a1 v1 इक्वल टू a2 v2.
if compressible fluid, sorry, incompressible fluid, rho 1 equal to rho 2, this equation is valid. And also it's valid for when the flow is steady, in case in steady and 1D flow. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. आई थिंक दिस सेशन इज़ वेरी गुड. इफ़ इट्स सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बोलना कैसा हुआ.